बात हम इंटीजर की करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इंटीजर. व्हाट इज इंटीजर? एनी वैल्यू लाइक -4, 4, 3, 2, 1, like which is not in a decimal form, which is not in a fraction form. We called it as a integer. Okay, so integer, like integer, there should be number like 3, 5, 10, 20, any number. Okay, so let's take a variable. Let's take a variable. Let's take a variable name a, and we store a value 10. Okay, so 10 will assign to the variable a, and नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंटीजर. हम लोग अभी इंटीजर की बात कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं फ्लोट का. फ्लोट मीन्स फ्लोट वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. ओके, फ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग. फ्लोटिंग का नंबर होता है कोई भी चीज पॉइंट में या फ्रैक्शन में, लाइक 3.2, 5.6, 7.9, कोई भी वैल्यू जो है इसको हम फ्लोट बोलते हैं, लाइक पॉइंट में हो. डेसिमल के बाद देयर कैन बी मेनी डिजिट्स, 7.9, 10, 11, लॉट ऑफ डिजिट्स. आई मीन देयर कैन बी मेनी डिजिट्स एज वेल. ओके, तो हम फ्लोट और इंटीजर का बात कर लिए हैं. अब हम बात करते हैं कैरेक्टर का. व्हाट इज कैरेक्टर? कैरेक्टर जो वेरिएबल्स है वो क्या है, कौन सा है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं. चलिए हम बात करते हैं. अब हम बात कर रहे हैं कौन सा, कैरेक्टर का. ओके, टेक अ पेन, ब्लू पेन. ब्लू पेन का दे लेते हैं. कैरेक्टर variable. Let's suppose take a variable name a, and we store here c. Or let's take a b variable, we store here m. So what we're doing here, we can store any like alphabetical digits, any name. Suppose c equal to Chandan. So Chandan is assigned to c variable. सो सी एक वेरिएबल है और चंदन उसमें असाइंड हो गया है. तो मतलब अगर हम कभी भी, अगर हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे, प्रिंट अगर हम सी लिखेंगे, प्रिंट हम सी लिखेंगे प्रोग्रामिंग में. प्रोग्रामिंग की बात हम बाद में करते हैं, बाद में करेंगे. विल टॉक प्रोग्रामिंग पार्ट लेटर ऑन पीरियड ऑफ टाइम. सो सिंस वी आर हियर, सो वी शुड टॉक अबाउट आवर वेरिएबल्स, हाउ इट वर्क्स. तो जब हम प्रिंट सी करेंगे, व्हेन वी विल प्रिंट सी, इट विल प्रिंट चंदन, क्योंकि सी में जो भी है, लाइक इन सी वॉट एवर नंबर, वॉट एवर डिजिट्स, वॉट एवर थिंग्स शुड बी देयर, इट वुड प्रिंट दैट थिंग. सो लाइक दैट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक कैरेक्टर कैसे काम करता है. तो ये वेरिएबल्स तीन तरह के मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है सी प्रोग्रामिंग में. सी प्रोग्रामिंग मोस्ट प्रोबेबली दिस थ्री वेरिएबल्स आर बीइंग यूज्ड. फर्स्ट वन इज इंटीजर, सेकंड वन इज फ्लोट, एंड थर्ड वन इज कैरेक्टर वेरिएबल. अब हम बात करते हैं कौन ये वेरिएबल, हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स. कॉन्स्टेंट क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टेंट्स. तो इसको हम रब करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट let me take another pen. कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या होता है? उसके पहले मैं बात करता हूँ, बिफोर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट, लेट मी इंट्रोड्यूस समथिंग मोर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील. तो हम उसके बारे में बात करते हैं. एक सेकेंड. लेट्स टॉक अबाउट constants. Let's talk about like the rules for naming variables in C. Rules for naming
सी हम किस तरह से लाइक नेमिंग दे सकते हैं वेरिएबल। तो पहला जो है, द फर्स्ट थिंग इज दैट फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। पहला जो कैरेक्टर है, सपोज वी आर राइटिंग वेरिएबल नेम, सपोज वी आर राइटिंग ए बी सी, ओके, और वी आर राइटिंग or we are writing what we should write length. So our first, what we say, first digit should be like first जो character है must be alphabet or underscore. It should start with alphabet, that is alphabet A B C D up to Z, or else it should start with underscore. This one is underscore. So if and the second one is नो कॉमर्स ब्लैंक्स आर अलाउड। कॉमर्स अलाउड नहीं है, नहीं ब्लैंक अलाउड है, खाली हम नहीं छोड़ सकते। नो कॉमर्स एंड ब्लैंक्स आर अलाउड, ओके। और तीसरा हम बात करते हैं, एक सेकेंड इसको हम इरेज कर देते हैं। थर्ड हम बात करते हैं नो स्पेशल, कोई भी स्पेशल सिंबल जो है, सिंबल्स other than this one underscore are not allowed in are not allowed for naming variables, okay। फोर्थ वन हम बात करते हैं variables must be case sensitive। इसका मतलब है, केस सेंसिटिव का मतलब है, सपोज एप्पल, अगर हम एप्पल ए कैपिटल लिखते हैं फर्स्ट लेटर, इफ सपोज यहाँ पे एप्पल है, दिस वन इज एप्पल, दिस वन बोथ इज एप्पल, बोथ प्रोनाउंस द सेम, बट द थिंग इज दैट द फर्स्ट लेटर हियर इज स्मॉलर एंड दिस वन इज बिगर, so it will take मतलब it will take into consideration, okay। So this should be for other variables name for different kind of material, and this is for different kind of material। Suppose we write length and we write L, a small L length, so these both are different, so these are, I'm talking about the case sensitive. Now let's talk about like how we can name the things like suppose length, breadth and all. So it should be like very meaningful. I would suggest that it should be not be like ABCD or something we wrote like any like anonymous name like something which doesn't mean seems meaningful. So it should be meaningful. Any names you, if you wanted to name the variable name, it should be meaningful. It should be very it should be readable. I mean readable. Yeah. So this is all about like variables which I have talked about. Now let's talk about constant. There is another I'm talking about the constant. It is also very important, I feel. So let's talk about constant. Actually constant का मतलब ही like mathematical way we have studied that constant means something which is constant, which cannot be changed, we would say. Suppose if we assign a equal to 3 and suppose if we want to change a equal to 4, it won't be changed, it should be 3. It has assigned already 3, that means it should be 3, we cannot change the value. So the thing is that the entity which cannot be changed on further or later period of time, that we call as like we call as that is means constant. तो हम साफ साफ का मतलब हम यहाँ पे लिखते हैं, a constant is an entity which whose value cannot be changed in
further period of time. Okay, basically what I'm focusing right now, I'm teaching you all like theoretical things, but later period of time I would be mostly focused on the coding part, how it works, how we can write the like peaceful code, so that we can apply on those competitive coding part. So means so that's the my purpose, the main purpose of means giving the lectures to you all guys ना नहीं अब हम बात करते हैं कांस्टेंट का। बात तो हो गया कैसे वैल्यू को हम लाइक चेंज नहीं कर सकते, और हम कैरेक्टर का बात किया, वी हैव टॉक्ड अबाउट इंटीजर, रियल, कांस्टेंट एंड लाइक अब हम बात करते हैं लाइक कांस्टेंट के भी बहुत तीन तरह के टाइप होते हैं। वी विल टॉक अबाउट द कांस्टेंट टाइप। once again let me rub this. Yeah, basically there are three types of constants. First one is integer constant, okay, that is -1, 6, 8, 10 like that. Real constant, which can be in point value 3.1, 1.5, 7.93 like that. Character constant, we have already talked about what is integer, what is float, and what is character. So let's talk about character constant. Character constant, that is what I'm writing here theoretically. Just try to understand what I'm trying to say. In coding part we will write in a very fresh way, so you people don't have to worry about that. This is character constant. This is inside this we can write some any like e something like that. Okay, now we have talked about variables, and now I have also talked about that constant. Now I am going to talk about keywords. Basically keywords. What is keywords? As the name suggests, it's a key, something which have some special meaning, special words. That means we can say keywords, something which has a like very huge impact. Means the thing is that these are reserved things, means reserved words. तो इट्स रिजर्व्ड वर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स रिजर्व, जो रिजर्व होता है पहले से वर्ड जो रिजर्व है, एंड वो कंपाइलर ऑलरेडी उस चीज़ को नेम दे चुका है, द कंपाइलर हैज ऑलरेडी गिवन द नेम, एंड those names, that like those variable names we cannot change. And suppose let's take one examples of keywords like auto, break, case, character, constant, continue, default, long, double, register, short, sign, these all are keywords. So if we write the name, like अगर हम variables लिखते समय अगर ऑलरेडी जो असाइंड है कीवर्ड्स, अगर उसको हम यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ दैट अनदर वेरिएबल्स, इफ यू राइट दोज वेरिएबल्स लाइक ऑटो, ब्रेक एंड ऑल, सो वहाँ पे एरर आ सकता है. Compiler will get like it is already reserved, so we have to avoid like already which is being already reserved words like these words. So we need not to write those words for naming the variables, new variables, right? So like some examples of keywords I wanted to write, like auto, break, continue, int, float, while, struct, switch, type def. These are some famous which we will be using in later period of time. So this is our like theoretical part that is of like variables, constant, and keywords. Okay. So beforehand, I would like to write our first C programming. First C program I will write with the help of this. What we have learned, like we have learned about what is variables, what is constant, and what is keywords. Now I would like to write on C programming. Okay, let's open VS Code. Those who are not having VS Code, they have to install VS Code. VS Code is actually very nice way to write the program. It's very easy to use, very handy for using.
It has already some boilerplate, so you guys can enjoy the coding part. Let's Visual Studio हो, तो हम अपना पहला प्रोग्रामिंग लिखते हैं. boilerplate. ये है अपना, this one is already library, this one is library. Okay, studio.h for C programming we use, and for std for that C++ we would be using, you will be using some different kind of means library. So and this one is int main. From यहाँ से मतलब programming का start होता है. From here the programming is going to be started int main से, और लास्ट में रिटर्न 0 हम लिखते हैं, और ये अपना दोनों कर्ली ब्रेसेस है. इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में. वी विल टॉक मोर अबाउट दिस थिंग्स. नाउ लेट मी राइट द फर्स्ट प्रोग्रामिंग. Suppose we want to print something, we will write print app, right? And if you write character, so we will have to do commas, that is double comma, like hello, I'm learning C programming with Chandan Chirag. Okay, now let's give this semicolon here. Now let's save this program and let's run. So it will print hello, I am learning C programming with Chandan Chirag, right? So likewise we are doing these things, and thank you guys. And in next lecture we will do some more coding, means some more programs, some more practice programs, so that you will get good clarity on like variables, constant and keywords. So thank you guys.